everyone, welcome to Angel's Learning. In this video, I'm going to discuss about relationship between radius of void and the radius of atoms in the closed vacuum. So let's get started. Let us first start with the octahedral void. Octahedral void हमें पता है कि octahedral void is formed by 6 pairs and the coordination number of the octahedral void is also 6. And now let us see the arrangement which is responsible for the formation of octahedral void. Suppose these are 3 particles arranged in this manner, and when we place the another 3 particles over this layer, then the resulting vacant space left is known as the octahedral void. देखो जो ये स्पेस है, वेकेंट स्पेस यहाँ पे बना है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं. ओके, जो ये अरेंजमेंट है, इसमें जो ये 3 येलो पार्टिकल्स हैं, ये बिलो वाले पार्टिकल्स हैं, एंड दीज ब्लू पार्टिकल्स आर दी अबव पार्टिकल्स. नाउ नोट दैट द शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज नॉट ऑक्टाहेड्रल. जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसकी जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल नहीं है, बट when we join these centers of these 6 pairs, then the resulting structure formed is the octahedron. And now to calculate the relationship between radius of this void and the radius of these particles, we have to consider the cross section of this octahedron. And the cross section of this octahedron is square. And now with the help of that one cross section only, we will get the relationship between radius of void and the radius of atoms in the packing. So let us calculate that. Here, this shows the cross section of the octahedron, where the blue particles are the atoms in the closed packing, and this yellow one shows the octahedral void with radius small r, and these atoms in the packing have the radius capital R. Now, to get the relationship between radius of atoms and the radius of void, first let us consider the right angle triangle ABC. And in this triangle, side AC is equals to R, small r, and capital R. जो ये AC है, इस फिगर से हमें पता चल रहा है AC is equals to capital R plus small r plus small r plus capital R. फिगर से हमें क्लियरली पता चल रहा है, and this is equals to 2R plus 2 small r. And by taking 2 as common, this is equal to 2 times of R plus R. Okay. So this is value of AC. Now, this figure itself, we see that AB is also equal to 2 times of R and BC is also equal to 2 times of R. Now, this ABC is the right angle triangle, and in triangle ABC, by applying Pythagoras theorem, we have AC square, which is hypotenuse, and hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. ये हमारी Pythagoras theorem. And by putting these values here, we get AC square is equal to 2R square plus 2R square. And this is equals to 4R square plus 4R square. And this is equal to 8R square. And from here, AC is equals to under root of 8R square, and this is equal to root 8R. अब root 8 को हम क्या लिख सकते हैं? root 8 को हम 2 root 2R भी लिख सकते हैं. So AC is equals to 2 root 2R. Now, by equating these equation 1 and 2, अब दोनों AC के इक्वल हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. And by equating these two, we get 2 times of R plus R is equals to 2 root 2R. और जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 times of R plus R, 2 को यहाँ डिवाइड करके ले आएंगे, is equal to root 2R. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. This implies R plus R is equals to root 2R. अब रूट 2 की वैल्यू हमें पता है, रूट 2 is equals to 1.414.
So by putting this value here, we get R plus R is equals to 1.414 R. And this implies small r is equal to 1.414 r minus r, and this is equal to 0.414 r. Therefore, small r is equals to 0.414 r. Now, r by r is equal to 0.414, and this is the radius ratio for the octahedral void. Okay, so this is the radius ratio for the octahedral void, where this capital R is the radius of atoms in the packing and this small r is the radius of this octahedral void. Okay, now let us calculate the radius ratio for the another type of void, which is the tetrahedral void. अब हमें tetrahedral void के लिए radius ratio निकालनी है. Tetrahedral void वो void होता है जो 4 particles से मिलके बना होता है और इसका coordination number भी 4 होता है. और tetrahedral void की arrangement कुछ इस टाइप से होती है. Suppose this is the first layer of atom, and when we place the another layer over this, then the vacant space left over is known as the tetrahedral void. And the arrangement of that tetrahedral void is such that, and remember that the shape of tetrahedral void is not tetrahedral, but when we join the centers of these particles, then the resulting shape which is formed is known as the tetrahedral. Okay, यहाँ पे भी जब हम इन पॉइंट्स के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तब जो शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल होती है. ओके, now let us calculate the relationship between radius of this void and the radius of these atoms. And to get the relationship, suppose this is the unit cell having particles A, B, C and D, and in this gray one shows the tetrahedral void. अब हमको रिलेशन निकालना है हमारे रेडियस ऑफ वॉइड में और रेडियस ऑफ दीज पार्टिकल्स में. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा एक ट्राइंगल विच इज दिस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. एंड इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में हमें क्या दिख रहा है, जो हमारी साइड एबी है वो एक फेस डायग्राम है ना, और फेस डायग्राम की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √2a होती है फेस डायग्राम की वैल्यू. ओके, एंड जो एक्चुअल सिचुएशन होगी उससे हमें ये भी पता है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एंड जो ए बी है वो इज ऑल्सो इक्वल टू आर प्लस आर, where 1r is radius of this particle A and radius of this particle B. So this AB is also equal to capital R plus capital R. It is equal to 2r. And by equating these two equations, we get a new relation which is √2a equal to 2r. And इसको हमने नेम दे दिया equation 1. Okay. Now there is another right angle triangle which is this triangle ABD, and in triangle ABD this AD is the body diagonal, और body diagonal की वैल्यू होती है √3a, where a is the side of cube. And from this figure itself we see that AD, फिगर से हमें पता चल रहा है कि AD किसके इक्वल है, capital R which is radius of this A and the diameter of this void which is 2r and the radius of particle at position D which is this. and इसको जब हमने सॉल्व करके लिखा, it is equal to 2 times of capital R plus 2 times of small r, and this is equals to 2 times of 2 को कॉमन ले लिया. Now अगेन जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो हमारे पास एक और रिलेशन आया जो क्या था, √3a is equal to 2 times of r plus r. Now अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे to get the relationship between r and r. Okay, now dividing equation 2 by equation 1, we get 2 times of r plus r equal to √3. ये हमारी इक्वेशन 2 थी. एंड अब हमें इससे डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से which is this. ओके, नाउ अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r plus r
डिवाइडेड बाय में r प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय में कैपिटल R इज इक्वल टू √3/2। नाउ इसको उधर लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, √2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने ये कर दिया एंड इस इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया, है ना। नाउ सॉल्विंग दिस वी गेट न्यू टर्म, so √2 small r equal to √3 capital R minus √2r। यहाँ से r जो है वो हमने कॉमन ले लिया and this is equal to √3/√2। ओके, नाउ अब रेडियस रेशियो निकालने हमको डिवाइड कर देंगे, जो ये r था इसको यहाँ ले जाएंगे, √2 को वहां ले जाएंगे, इट इज इक्वल टू √3 minus √2 over √2। सो दिस इज द रेडियस रेशियो। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इट इज इक्वल टू √3/√2 minus √2/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, √3/√2 minus 1। अब √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और जो √2 की वैल्यू होती है उसको क्या होती है 1.414 एंड by putting these values we get the radius ratio for the tetrahedral void as 0.225। okay, so this is the radius ratio for the tetrahedral void। जो tetrahedral void है उसके लिए जो radius ratio होती है 0.225। okay, that's all for this video। thank you for watching। stay safe, stay healthy and be positive and happy।